एक्सेप्शंस। यहाँ पे फिर एक सवाल आता है, इफ I actually got 1 rupee for every time someone asked me this question, section number लिखना है क्या? Probably I would be at least a लाखपति by now. That's the extent to which I have answered that question. As far as directors is concerned, there is no compromise. बिल्कुल हर एक सेक्शन नंबर टू द एक्सटेंट पॉसिबल सब सेक्शन अपने को रिप्रोड्यूस करना है पेपर में. Other chapters of Companies Act, to the extent you are comfortable, do it. And for economic laws especially, many questions will be repetitive. पिछले 2-4 अटेम्प्ट आपने देखा है उन क्वेश्चंस को, so you might remember the correct section number, so go for it. I have no objection, but गलत मत लिख के आना. There have been cases, I have seen papers, everything was correct, एक चीज गलत थी, सेक्शन नंबर गया भाई पूरा 0. Don't do that. Safer side, as per the relevant provisions of XYZ Act लिख के आ जाना, बिल्कुल चाल से. The second paragraph of your answer would be the facts of the case. Don't try to increase the content. Summarize करना to the extent possible. पेपर बहुत लेंदी है, ना लिखो तो भी चलेगा. Facts of the case को कोई independent marks generally तो नहीं रहता, because you are just reproducing, summarizing what is given in the question. If the paper is lengthy, do not write facts of the case. That's absolutely okay. फिर बात आती है एनालिसिस की. ये है प्रोविजन, ये है फैक्ट्स. Now why do you wish to apply this provision to these facts? Convince the examiner, convince the paper corrector. This is the reason why we are applying this provision to these facts of the case. अगर कोई case laws है, as I told you, some chapters have case laws like prevention of operation and mismanagement. So there you can write the case laws, but बाहर का कुछ लिखना मत. To the extent possible, जितना मॉड्यूल में दिया है उतना case laws खाली लिख के आना. बहुत कम है. It's very less for us, so it doesn't matter much. आगे. Lastly, conclusion. Conclusion लिखते टाइम एक टिप आपके लिए. Question वापस एक बार पढ़ो. Read the question once again before writing the conclusion. Your conclusion should be exact answer to the question asked. घुमा फिरा के नहीं लिख सकते. If they have asked, will the director be guilty? You have to write yes, director will be guilty. ये मत लिखना the contract is void. पूछा है नहीं तो director guilty है कि नहीं पूछा है उतने का आंसर दे दो. A one liner where you directly answer the question asked. That's the conclusion. That is how you will be answering. Preferably start with MCQs. You are getting 30 marks for around 30-40 minutes of efforts. The fastest marks you are scoring is here. Again in descriptive, decide the order. एक क्वेश्चन जो छोड़ना है वो डिसाइड करना. Decide the order in which you are going to attempt. The best questions which you feel have to be attempted first. The worst question जहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं है, बहुत कम उम्मीद है, attempt it last. Reason, you are actually combining two risks when you attempt the सबसे difficult question last. The risk of not getting marks and the risk of not being able to complete the paper is combined here. And this is the best way you can prioritize which questions to attempt. ये बताने का बात नहीं है, but solve all the sub questions together. Question 1 A के बाद question 1 B या vice versa. But question 2 C के बाद question 3 B मत करना. Solve it together, नहीं तो नहीं मिलता marks. Length of the answer, कितना pages भरना है, सर कितना लिखूं 4 मार्क का, doesn't matter. A complete justifiable answer, however short, however long, will fetch you pura marks. Don't worry about that. Can we highlight in the paper? If time permits, use the same pen with which you are writing. Highlighting with pencil or highlighting with some other color pen, not permissible. And by this time, I think you are smart enough to understand. Always keep the calculator handy, even in supposed theory papers. Audit है, law है,
ओल्ड सिलेबस वालों का अपना इसका है, इकोनॉमिक लॉस का पेपर है इलेक्टिव. कीप द कैलकुलेटर हैंडी बिकॉज यू नेवर नो कहाँ पे कैलकुलेशन आएगा. सो आई होप दिस इंस्ट्रक्शंस आर pretty much useful for you since you are in the last leg of your preparation. एक आपको तो ये सब पता है, बट एक बार खाली I try to put it once again in your mind that this is how you have to approach. बाकी तो confidence तो चाहिए अपने को. Since we are giving one of the toughest exams, we require a belief in ourselves. We talk about this as and when we are solving MTP. Guys, are we clear with this? Kindly give me the green signal to proceed further. The main agenda today is discussion of MTP and we will be starting it right now without any further ado. करें शुरुआत. अब ब्रेक मत मांगना यार. हाँ, so let's start it out. Let's see what are the questions they have asked. Yes, time allowed is 3 hours. We are aware. We are also aware that MCQ will be division A, total 30 marks. Descriptive will be around 70 marks. So वो सब ठीक है. एक last confirmation. The screen is visible and it is visible in the right font. ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं है. Whatever is on your screen. All right. All right. So let us begin. सबसे पहला तो MCQ आएगा. So when we are dealing with MCQ, integrated MCQs, I would recommend, personally I would recommend integrated MCQ थोड़ा बाद में करना. Standalone MCQs पहले खत्म कर दो. And we would be doing the same thing right now as well. We would be first seeing the standalone MCQs and how much we are able to attempt it. And बाद में let's see the integrated MCQs. ये देखो independent MCQs है. चलो स्टार्ट करो. जय माता दी. लगा दो अपना अपना बोली. Question number 10 on your screen. Allotment of shares by the directors of the company by which existing majority is reduced to the minority. As per the provisions of Companies Act, the above act of the company should be classified as. जो majority में थे because of subsequent allotment उनको minority में reduce कर दिया. What will it be? लगा दो अपना बोली. रौनक भाई साहब बोल रहे हैं A आएगा. What about others? अच्छा, we have kind of unanimity here because two people are answering me and both of them are having the same answer. So I assume there is a unanimity. It would be operation because mismanagement तो तब होता है when it is unintentional. Material change in the company, nah, that's not even defined. So we have the answer for question number 10 is A. Another thing. I would recommend you have ebook of MCA opened on your screen. I would recommend that. जिधर भी कोई भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में डाउट आता है ना, जस्ट रिफर ओवर हियर बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट वे टू आंसर. एंड सेकेंडली कीप कैलकुलेटर हैंडी फॉर द नेक्स्ट 1 hour. आई वुड रिक्वायर यू गाइज विद कैलकुलेटर. अभी आए हैं तो शिद्दत से करके जाएंगे. देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन आवर पार्ट. So just keep everything handy. You are calculating right now. And ebook MCA इसलिए because we don't need any agents. अपना वास्ता डायरेक्ट ऊपर MCA तक. No author books, nothing in between. Direct bare provisions देखेंगे to confirm whatever is written is right or wrong. Next question number 11 थोड़ा ट्रिक है. Prospectus area से है. Prospectus area from the foreign company chapter.
In which of the following cases the issue of prospectus by a company incorporated outside India will be invalid in law, considering the provisions of Chapter 22 of Companies Act? कौन सा गलत है? In which cases में prospectus is invalid? First, consent to the issue of prospectus required by any person as an expert is attached to the copy of registration. ये तो allowed है यार, ये क्यों दे दिया? This is allowed. Point number B. In case where the prospectus is signed by the duly authorized agents of the directors. Okay, directors are not signing the prospectus, their agents are signing. So you attach a power of attorney ka copy as well and it is valid. They have written they have not attached the power of attorney. Power of attorney is not attached to the prospectus. So can I say गलत है, invalid है? It's invalid. चल बाकी दो ऑप्शन भी देखते ही है. Company incorporated outside India, not having place of business in India, they are not covered by this chapter 22. Foreign company के definition के ही बाहर है option number C. We are not dealing with it. Foreign company by its very definition is a company incorporated outside India, having a place of business in India and carrying out business activity in India. Section 2 clause 42 याद करो. So we are not even dealing with this C wala point. Point number D. A company to be incorporated outside India. Very ambiguous option. इसका तो मतलब कुछ relation ही नहीं है with the question. So we have point number B as the answer. Lock किया जाए दोस्तों. Point number B lock करता हूँ because power of attorney was missing. It's invalid. Further, let's take it further. Next question. It's dealing with investigation wala topic. Let's see what is written. Ultra Limited was incorporated on 13th May 2019. After 1 year of its incorporation, the shareholders of company come to know that some transactions inside the company are not in accordance with the provisions of Companies Act and are also prejudicial to the interest of company and its members. So some shareholders decided to make an application to the central government to conduct investigation into affairs. CG को अप्लाई किया. I think section 210 ये केस कवर कर रहा है कंपनीज एक्ट का. So there are 4 cases when you can apply to the central government, and one of them is when the members pass a special resolution. Inter alia members can pass a special resolution and file an application with the central government, and then central government may ki shall, central government may order investigation ki shall order investigation अगर member मांग रहा है तो. छोटी तो छोटी चीजें धमाका करके जाएगी एग्जाम में. अपना फंडा क्लियर है इधर. स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. बोलो 210 में अगर अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट को मेंबर्स ने, देन इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. ई बुक है तुम्हारे सामने रेफर करने. मेक दिस अ कंप्लीट इंटरैक्टिव एक्सरसाइज. मे आएगा आंसर बिल्कुल. We would have may as the answer. Only when tribunal directs the central government, tribunal अगर बोलता है, NCLT बोलता है, then it would be shall. In other cases, it is at the discretion of the government. So no shareholder didn't have right to make application. Nonsense. Yes, shareholder after passing special resolution can make application. Makes sense. Point number B फिलहाल तो लॉक करते हैं, लेकिन आगे देखते हैं. Yes, shareholder can make application without special resolution as company business is not in interest of company. ना special resolution तो लगेगा भैया. You can approach the tribunal if you are lesser than 75%.
बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जाना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा. Even after passing special resolution cannot make application, absolute nonsense. Can we say B is the answer? बाकी कोई आसपास भी नहीं है ऑप्शन. And another 2 marks are in our kitty after this kind of easy question. Question number 12 में MCQ 12 में the reference was section 210. मैं reference बताते जाऊंगा. You can mark it if you want. कौन सा section देखना है? आगे देखते हैं. चलिए, compromise arrangement amalgamation. Question number 13 on your screen. Kindly answer. कहाँ आएगा? कितना परसेंट क्रेडिटर अगर एक्सेप्ट करता है? Then in that case you do not require the meeting of creditors. So we have a unanimity. Sir, one of the few things we remember, 90% of the creditors. The reference here would be section 230. Go through section 230 in case you have any query. Next, tricky question. After the amendment, it gets even more tricky. What is the mandatory period for completion of the corporate insolvency resolution process? Mandatory period. एकदम upper limit पूछा है ये लोग ने. Against any corporate debtor. 180. I'm tempted to go with 180, but they are saying maximum period. 270 sir, plus 90 कर दो. One time extension मिलता है ना 90 दिन का. Just add that 90. You get 270. Oh, what if there is a stay order from High Court? Shabash, 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 Ronak. We get maximum 330 days including everything. Original 180 days, one time application करने के बाद वाला extension. कोर्ट में अगर कोई स्टे ऑर्डर है तो इन दैट केस एड एवरीथिंग, मैक्सिमम 330 इज द आंसर. सेक्शन 12 ऑफ आईबीसी इज द की हियर. कोई डाउट है? रिफर सेक्शन 12. इट हैज all the things, and after amendment this is a very important question. 180, 90 plus they have introduced that gap of 60 days in between कि 330 तक जा सकता है मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फेमा पे पूछा है. मिस्टर रमन, अ नॉन रेसिडेंट, हैज एन SIP with a mutual fund in India. Mr. Raman, due to some financial problems, requested his brother Mr. Raghav in India, भारत का नागरिक, Indian resident, to make the payment of few subsequent installments of SIP. अपने विदेशी भाई के लिए अपना देसी नागरिक पैसा दे रहा है. Is it permitted or is it हवाला? And this is not even a current account transaction. Investment in mutual fund का बात हो रहा है. Permitted है कि हवाला है? Section 3 of FEMA एक बार गौर करना. Just check it out. If you are making any payment to the credit of a person, PROI, it is not permitted. शाबाश निधि. Section 3 of FEMA में payment by a resident to the credit of NR, PROI मतलब rather, it is not allowed, not permitted. Answer has to be A. Such transaction is not permitted. Section 3 of FEMA is the key here. फिर आगे बाकी options you can read, but you will realize prior permission of RBI schedule 3 वाला item है ही नहीं. It is not even a current account item. Not permitted as Raghav cannot enter into such transaction on behalf of his non-resident brother. I think A is more appropriate. It talks about
payment to the credit of non-resident. If two options you think are correct, choose the better worded option. सबसे अच्छा जो option worded है, which is closer to the provision, prefer that. And can enter तो nonsense है. It's a हवाला basically अगर आप allow करते हो तो. FCRA, an association was holding the certificate of registration, making it eligible for acceptance of foreign contribution. अच्छा certificate मिला है. Purpose is for betterment of poor children. CG later cancelled the certificate of the association for violation of the terms and conditions of certificate, for being not engaged in chosen activity for poor children. तूने बोला तू गरीब लोग के लिए काम करेगा लेकिन you are not doing it, so we will cancel your certificate. CG cancelled. Such association again applied for registration. बोलो रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के बाद कितना टाइम बाद मिल सकता है? व्हाट इज द कूलिंग पीरियड? FCRA, the trick here is section 14 subsection 3. What is the cooling period we know of FCRA by the way? हाँ 3 साल का कूलिंग पीरियड है. शाबाश. नेक्स्ट सारफेजी का एक ऐसे एरिया से क्वेश्चन है वेर यू डू नॉट पे मच ऑफ अटेंशन. वी स्टार्ट लूजिंग अवर पेशेंस आफ्टर सेक्शन 13. एक बार वो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो गया, फिर थोड़ा डिमिनिशिंग यूटिलिटी रहता है अपना पढ़ते टाइम. सो लेट्स चेक इट आउट. State which of the following statements are correct with regard to filing of caveat. Caveat is basically you get an information if somebody has applied to the court against something. आपको भी जानकारी मिलती है. That's what caveat is. 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे. Which of the following is correct पूछा है. First, if a secured creditor files a caveat against the proposed action of borrower. Okay, borrower is proposing an action, तो caveat पहले फाइल करेंगे. DRT में अगर कुछ फाइल हो रहा है तो caveat फाइल करने का बात हो रहा है. The secured creditor has to issue notice of the caveat to the borrower within 7 days from the date of filing caveat. Looks good, but the only issue here is 7 days किधर भी mentioned नहीं है. Where did they bring this 7 days here? It's not mentioned anywhere. बाकी तो it looks good. Second, validity of the caveat is 60 days. अरे ना यार क्या बात कर रहे हो? Even if we have read it once, we know validity caveat का 90 दिन तक रहता है. It's 90 days. Also ये 7 days वाला कहाँ से आया? We are not aware. So 17 का आंसर would be D. None of the above is correct. For obvious reasons यहाँ पे तो 90 days आएगा. And in the A वाला option, we have nothing, we have no time period mentioned in the act, so we would be sticking to the answer D. 17 के लिए refer section 18C of SARFAESI. Last question. Are you observing one important thing? ये जो MCQs है ना, they are asking it from the expected chapters, but they are asking it from unexpected areas. They are trying to find out student का psychology. कौन सा एरिया स्टूडेंट थक जाता है और स्टूडेंट आगे नहीं पढ़ता किसी चैप्टर को. कौन सा एरिया स्टूडेंट को इररिलेवेंट लगता है, एंड आस्क फ्रॉम देयर. केवीएट किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा एग्जाम में आएगा. फॉर्म्स पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है आईबीसी का. ये देखो क्या लिखा है. शिवदीप सबमिटेड हिज क्लेम एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर to the liquidator of Chiranjeevi Food Products Limited. Okay, a company under liquidation. Operational creditor है, अपना claim submit किया है. If Shivdeep wants to vary his claim, vary करना है claim किया. Now he wants to change the amount. He wants to change certain details. What is the time period within which he can do so from submission? Anybody wants to give it a try?
आईबीसी का क्वेश्चन है एंड इट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लिक्विडेटर, मतलब सेक्शन 30 के अराउंड रहेगा वहाँ. Divergent answers we have over here. अमृता मैडम एक बार है ना, you just go through section 38 of IBC. You will realize it's 14 days, irrespective of whether you are operational creditor or financial creditor. Variation in the claim already submitted can happen only within 14 days from the date of submission. So section 38 of IBC एक बार refer करना. That's the key over here. This is what we know कि 14 days के अंदर अपने को क्लेम अगर ऑलरेडी फाइल किया है ऑपरेशनल क्रेडिटर में तो वो वेरी करना है, कैनॉट डू आफ्टर दैट. दिस आंसर्स ऑल द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज. तो कमर कस लेना, थोड़ा ज्यादा एफर्ट रहेगा. एंड इंस्टीट्यूट हैज शोन इट्स ट्रू कलर्स हियर. द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, one from an area you expected but never expected it to be so difficult. Second from an absolutely unexpected area. ऐसा है ये. Let's start it. MCQ number 1. I hope everybody on your screen. Let's just begin. Mr. Sham was removed from A Limited by the board in which he was serving as managing director a whole time KMP, with the condition that he will be compensated for his early vacation of office. I hope you understand where this is going. Managing director को remove किया है and he is compensated. Can I say section 202 loss of office of MD. Office of Sham was vacated on 31st May 2020. And his original tenure of appointment with A Limited was up to 31st December 2022. ओके, चाल से मतलब कितना जल्दी उसको भगाया गया ये भी देखेंगे. He was removed, कैलकुलेटर अपने हाथ में, 31st May 2020 को, मतलब he was removed जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीना 2020 का, 12 months 2021 and 12 months 2022. And I say removal was 31 months before expiry of his tenure. All right, आगे क्या दिया information. The remuneration drawn by Mr. Sham is given. I hope you understand where this is going. 202 का कैलकुलेशन पक्का करवाएंगे ये लोग. Remuneration drawn by Mr. Sham since the date of his joining. I see. He has not even completed 3 years, जिसका हम average लेते हैं. That's fine, not an issue for us. In the first year, it was 55 lakh per annum. In the second year, it was 62 lakh, and in the third year, up to 31st May, up to the date of his removal, it was 13 lakh. कितने months के लिए है? How many months? यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 months. Can I say total 26 months? Somebody add this for me. Calci तो अपने हाथ में है ही. This is why you require calci, by the way. 55 plus 62 plus 13 करके देखते हैं क्या है. It's 130 written over here. And we have 26 months. So per month on an average उसने कितना कमाया? He has earned 5 lakh per month. That's his remuneration. The data collected from the balance sheet of A Limited is as follows. ये लोग ने क्या डेटा मांगा है?
paid up capital, share application money, general reserves, revaluation reserve, security premium, long term loan, funded interest term loan, एक साल से ज़्यादा बाद पेएबल लिखा है, its working capital loan, mutual fund investments and miscellaneous expenditure not written off. Right now we have absolutely no idea ये किस चीज़ के लिए डेटा दिया है. ठीक है, let's keep it with ourselves and we proceed. Next, we have information that Mr. Tushar was appointed as the new managing director of A Limited on 1st August 2020 as a replacement of Mr. Sham. 1st August 2020 को appoint किया. Good. Company decided to pay remuneration to Mr. Tushar as per section 197 subsection 4 of the Companies Act. It was decided to pay him for following additional perquisites. कुछ perquisites का बात हुआ है. What are the perquisites? Dearness allowance 7 lakh, house rent allowance 5 lakh, contribution to annuity fund is 6 lakh, direct tax reimburse करवा रहा है company, nice, it's 4 lakh, additional remuneration per month it is 2. आदमी अपॉइंट हुआ था अगस्त में, सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 8 महीना वो ये साल है. So for 8 months we have 16 lakh rupees as remuneration. Additional, why additional? Remuneration for service to be provided by him in capacity of consultant. अच्छा ठीक है. Also he possesses requisite qualification for the same as opined by the NRC. NRC बोलता है he is a professional, he is an expert and he is a good consultant. So apart from his managerial remuneration, we will also provide him additional remuneration as a consultant. That's fine. Sitting fees per meeting will be 1 and he has attended 4 board meetings. One of the members of A Limited, Mr. Jay, wanted to inspect contract of service entered into by A Limited with Mr. Tushar. Contract of service inspect करना है, कर सकता है, 190 section है उसके लिए. But Mr. Jay was denied to have such an inspection on the ground that contract with Mr. Tushar was not in writing. Section 190 एक बार देखो ना दोस्तों. Section 119 में ये clearly लिखा है 190 में. If contract of service is not in writing, contract of employment is not in writing, you need to furnish an information memorandum. Employment का information memorandum furnish करना पड़ेगा. So writing में contract नहीं है is no ground for denying inspection. That's it. That's the data. आता कसं वाटतंय? क्या feeling आया? ये पूरा integrated MCQ पढ़ के. Can I conclude you have been caught off guard? To an extent, थोड़ा difficult लग रहा है अभी. We were ready for standalone MCQs, but this integrated thing is more difficult, more challenging, है ना? बराबर. So welcome to CA final. That's how things are going to be, but it's a very nice journey, trust me. Maximum amount of compensation to which Mr. Sham is entitled for premature termination. So it is 3 years, section 202. Wherever Companies Act is there, I am not mentioning the name of the act, but exam में अपने को लिखना है वो 3 years यानी 36 months or the period of service which he would have completed had he not been removed. अगर वेकेशन नहीं होता तो और कितना महीना वो सर्विस करता. It is 31 months, whichever is lower, and his monthly average remuneration we have calculated. It is 5 lakh rupees. हमने ऊपर कैलकुलेशन करके रखा है. So simple mathematics applied to section 202, we get the answer 31 महीना 31 months
multiplied by 5 lakh gives me 155 lakh. है क्या ऑप्शन में 155 लाख और 1.55 करोड़ एज आई कॉल इट? क्या तुम्हें 1.55 करोड़ दिख रहा है? वो डोरा दी एक्सप्लोरर में करते हैं ना, समथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज स्टिल, दैट कार्टून में दे यूज्ड टू आस्क अस क्या तुम्हें दिख रहा है. सो वी हैव दिस ऑप्शन एंड वी हैव द आंसर एज वेल. It's 1.55 CR, and how we computed 36 or 31 months, whichever is lower, multiplied by average remuneration, which we calculated as 5 lakh. Average for 3 years or for the period which 31 months सर्विस में था, तो वो 31 मंथ्स का रेम्यूनरेशन सॉरी 26 मंथ्स का रेम्यूनरेशन हमने कैलकुलेट किया है, एंड दैट इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नोबडी सॉ दिस कमिंग. शेड्यूल 5 पे सीधा वार किया है इंस्टीट्यूट ने, एंड दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपिटल. चलो एड लेस वाला गेम खेलते हैं एंड लेट्स गेट द इफेक्टिव कैपिटल. वी हैव ऑल द डेटा, वी जस्ट नीड टू ऐड और लेस थिंग्स. कैलकुलेटर अपने हाथ में, एंड जस्ट टेल मी वेदर टू ऐड, वेदर टू लेस, वेदर टू इग्नोर. लेट्स स्टार्ट. पेड अप कैपिटल ऐड करूं, लेस करूं, इग्नोर करूं? इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन में एक एक करके बता देना मुझे. ऐड, लेस, इग्नोर. लेट्स प्ले दिस गेम. ऐड करना है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर. सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन मनी. वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस. बाय द वे कौन सा सेक्शन रिफर करे फॉर अस जिनको नहीं समझ रहा है? रिफर सेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन 1. ऑफ शेड्यूल 5. ऑब्वियसली शेड्यूल 5 के सेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन 1 अपने स्क्रीन पे रखना. इट्स अवेलेबल इन द माय गवर्नमेंट पोर्टल, अपना कंपनीज एक्ट का पोर्टल, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. शेयर एप्लीकेशन मनी इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना. फिर उसके बाद जनरल रिजर्व्स. यस सर ऐड करना है. इट्स अ रिजर्व. रिवैल रिजर्व नहीं, रिवैल रिजर्व स्ट्रिक्टली ऐड नहीं करना है. सिक्योरिटीज प्रीमियम वी आर सपोज टू ऐड. लॉन्ग टर्म लोन will form part of effective capital. Interest term loan is generally not part of the capital, but it is funded. तो ब्रैकेट में देखो लिखा है unless funded. So funded अगर रहेगा और 1 साल के बाद भी पेएबल है, they are giving us hint to include it in the effective capital. ऐड करो. वर्किंग कैपिटल लोन तो इग्नोर करेंगे. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट is a proper investment, has to be deducted. And miscellaneous expenditures not written off have to be deducted. बिल्कुल. कितना हो गया? 1000 प्लस 200 प्लस 500 सॉरी 1000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 100 माइनस 350 एंड माइनस 50, मतलब माइनस 400. कहने से 19 करोड़ ऐसा कुछ आंसर आ रहा है आपको. द होल प्रीमाइस इज शेड्यूल 5 का अपना एक्सप्लेनेशन. सो इफ यू आर गुड विद दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस. सो वी गेट 19 करोड़ एज आंसर आफ्टर डूइंग दीज कैलकुलेशंस एज मेंशन्ड. है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है. शाबाश, we got the answer for this one. Taking it further, आगे सबसे controversial question is पूरे MTP का will be question number 3 and I will discuss it at the end. अब भी नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम भी जा सकता है.
बिकॉज इसमें किसी का भी बराबर मैच नहीं हुआ है. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ आंसर. सो आई विल नॉट राइट नाउ डिस्कस इट, बाद में कर लेंगे. लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 on your screen. For the removal of Mr. Sham, which type of resolution was required to be passed? यार डायरेक्टर है, रिमूव करेंगे, हमें पता है, बताने की क्या जरूरत है. सेक्शन 169 इज वेरी क्लियर. A director is generally removed using ordinary resolution. And what is the last date till which Mr. Tushar should have been appointed in case he was not appointed on 1st August? Question number 1. Which type of resolution? It is ordinary resolution. Director का removal and appointment both happens by ordinary resolution. Plot में थोड़ा twist, थोड़ा trick question आपके लिए. There are 3 cases, 3 cases है where the removal of director does not happen by ordinary resolution. Can you guys name at least one of the 3 cases? As a general rule, बिल्कुल, the appointment always happens by ordinary resolution. The removal also happens by OR. 3 cases where SR might be used, where maybe there is some other way of removal. चल मैं ही बता देता है, टाइम भी थोड़ा कम है. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेकेंड टेन्योर. हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट फॉर द सेकेंड टाइम, it happens by special resolution. So removal will also happen by special resolution. Second, under the operation mismanagement chapter, tribunal can also appoint the director. Any director appointed by the tribunal can only be removed by the tribunal only. Members have no say in removing that person. Thirdly, proportionate representation. Section 163 proportionate representation, जहाँ पे appointment happens by single vote or cumulative vote. It is not happening by a resolution. Removal will also not happen by resolution. ऐसा है. So we have this answer, ordinary resolution तो आएगा. What is the last date by which the next director has to be appointed? For managing director, we specifically have section 203. Section 203 very clearly categorically states 6 महीने के अंदर अपॉइंट करना है, in 6 months. So if appointment has to happen within 6 months, calculate 6 months from the removal. 31st May से 6 महीना is 31st November. Here we go. So very simple. Answer is option number D. Taking it forward, आगे. Whether company's contention for denying the inspection to Mr. Jay was correct. वो उसको बोला था कि हमने employment का contract writing में नहीं डाला, so we will not allow you inspection. Absolute nonsense था वो. And what are the consequences of the same? Let's see the options. Penalty पूछा है. Contention is not correct as the contract of service with the managing director should have been made in writing and kept at registered office. Partially correct. Information memorandum में चल जाएगा ना. And penalty दिया है 25,000 for the company and 5,000 for the officer in default. Okay. Let's see the other options. Partially correct. Member has no right to inspect. कुछ भी partially correct, ऐसा कोई option भी हो सकता है. Point number C, not correct. If the contract of service is not in writing, then a written memorandum should be given, should have been prepared depicting the terms of contract of service. एक written memorandum होना चाहिए था अगर contract of service is not reduced to writing. And then they have given the penalty. So penalty में तो कोई झगड़ा ही नहीं है. Penalty सब जगह पे same दिया है. Last, it is correct. If contract is not in writing, then member cannot ask for inspection.
कुछ भी बात करता है। 190 सेक्शन हैज क्लियरली स्टेटेड इंस्पेक्शन कर सकता है मेंबर। क्या लिखूं, ए लिखूं कि सी लिखूं? दोनों नॉट करेक्ट है, बट देयर लॉजिक इज डिफरेंट बोथ केसेस. Which one you guys would prefer more? C is more closer to the provisions and we stick with the provisions. So C remains our answer. We stick with the provision where written memorandum का बात हुआ है in case the contract is not in writing. So the answer is C. Question number 3 लास्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं. Question number 1 मजा आया सॉल्व करके? Was pretty challenging, required lots of calculations. इस चीज को इसलिए बोलता हूँ, लेके जाना है. ऑन अ लाइटर नोट, कभी कभी पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करने के भी काम आता है. सेकेंड एमसीक्यू, सेकेंड इंटीग्रेटेड एमसीक्यू इज फ्रॉम निधि कंपनी. मिसलेनस पहुंचते पहुंचते अपना पेशेंस और अपना मेमोरी खत्म हुआ रहता है. एंड निधि इज वन सच एरिया जो बहुत गौर से हम नहीं देखते. इंस्टीट्यूट हैज कॉट यू ऑफ गार्ड फॉर द सेकेंड टाइम. In fact, the first 18 marks are the most difficult to score in this paper, if you can see. I'm reading the question with me. Mela Nidhi Limited provides following information from its financial statements as on 31st March 2021, which are audited by QR LLP, an audit firm, which has completed 3 years of its second term. ठीक है, केस निधि की है, निधि बोला नहीं है लेकिन यहाँ पे निधि लिखा है. सो पूरा डायनामिक्स हिल जाता है. द नॉर्मल कंपनी को जो प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, निधि को हमें सोच समझकर अप्लाई करना पड़ता है. वी हैव सर्टेन डिटेल्स ऑफ दैट निधि. टोटल डिपॉजिट्स आर 260 lakh. ओके, द ग्रॉस इनकम ड्यूरिंग द पीरियड वाज 90 lakh एंड द प्रॉफिट्स आर 40 lakh. फेयर इनफ. One of the directors, Mr. Raj, has completed 10 years. For your information, निधि में डायरेक्टर्स 10 साल के लिए अपॉइंट होता है, 10 साल से ज्यादा नहीं. लेकिन Mr. Yash is willing to propose his own candidature for directorship. ओके, कर सकता है, हाँ कर सकता है. सेक्शन 160 अपने को पता है. अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर कोई और अगर प्रपोज कर रहा है, he can definitely be the candidate for directorship. कंपनी एक्सेप्टेड न्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम 12 पर्सन्स. 12 लोग जिनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया. 6 टर्म डिपॉजिट्स, 4 सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड 2 recurring deposits. By the way, I would recommend you guys to read the rules of Nidhi once, because ये पूरा जो 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स है ना, पूरा रूल्स के ऊपर घूम रहा है. और इफ यू आर नॉट कन्वर्जेंट विद द रूल्स, डजंट मेक सेंस, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा. तो रूल्स बाद में पढ़ लेना याद से. हम आगे बढ़ते हैं. कंपनी एक्सेप्ट. अपार्ट फ्रॉम द अफोरमेंशन्ड पर्सन्स, Mr. Dev, an Indian citizen, wanted to make a term deposit of 1 lakh. कर लो. Who recently returned from US after staying for 4 years. Okay, for carrying on business in India. ये फेमा किधर से आ गया बीच में? Whose proposal is on hold with company. चलो ठीक है, every information is absorbed. And now we proceed with the questions. पहला, what should be the minimum value of net owned funds? कारो याद करो, कारो में भी ये पॉइंट मेंशन रहता है. net owned funds is 1:20. For every 20 rupees of deposits, you need 1 rupee of fund. And कितना डिपॉजिट्स अनएनकम्बर्ड हो सकता है? रूल्स चेक करना. 10% of total deposits. This is rule 5 of Nidhi rules. Rule 5 of Nidhi rules. हमने देखा ईयर एंड पे टोटल डिपॉजिट्स आर 260 लाख. ऊपर 260 लाख लिखा है. एक बार देख लो आप लोग वापस. ये देखो 260.
So let's get the calculations right. Nothing much, only calculation part is relevant. 260 लाख डिपॉजिट्स है तो नेट ओन फंड्स कितना मांगता है? 260 divided by 20, so it is 13 lakhs. वैसे तो ऑप्शन ए is the only logical option. Let's calculate the unencumbered term deposits. Unencumbered term deposits, my dear friends, have to be minimum 10% of the total deposits. Again, rule 5 is the rule that is applicable. So 260 का 10% is 26 lakhs. So answer is A. Answer is A. A very good reality check for you guys. Next, another area where you ignore. If Mela Nidhi Limited provides locker facilities, कितना परसेंट locker facilities provide हो सकता है? ग्रॉस इनकम का 20%, और ये लिखा कहाँ पे है? नहीं 25 नहीं है, 20 अमेंडमेंट है, चेक कर निधि. It is now 20%. Rule 6, check rule 6 of Nidhi rules. Secondly, maximum dividend का भी बात हुआ है. If there is no default, there was no default by the way. Yeah, there is one correction, there was no default. So maximum dividend is profit का 25%. Nidhi got confused with her own company. Profit का 25%. ये किधर लिखा है? The answer is, it is written in rule 18. चलो करो कैलकुलेट, गेट मी द आंसर. ग्रॉस इनकम का 20% मैक्सिमम लॉकर रेंट एंड मैक्सिमम डिविडेंड विल बी प्रॉफिट्स का 25%. कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर विल बी डी. ग्रॉस इनकम का 20% एंड प्रॉफिट का 25%. ऑल राइट. सो ग्रॉस इनकम अपना कितना दिया है? 90 का 20% is 18 and 40 का 25% is 10. So answer is D. Perfect. Answer is D. रूल्स वगैरह मैंने लिखा है, यू ऑल्सो जस्ट राइट इट डाउन. नहीं तो आई थिंक विकासा रिकॉर्ड्स दीज, सो इन केस यू रिक्वायर यू कैन सी दैट मार्किंग्स इन द रिकॉर्डिंग एज वेल. फिलहाल अभी शिद्दत से खत्म करते हैं. फॉर हाउ मेनी ईयर्स मिस्टर राज इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर? कूलिंग पीरियड फॉर निधि. ऑर्डिनरी कूलिंग पीरियड तो 3 साल का है, वो जाने दो. फॉर निधि व्हाट इज द कूलिंग पीरियड? अगेन कॉट ऑफ गार्ड. Institute is hitting you where it is hurting. No doubt CA final is the final frontier. शाबाश. 2 साल 2 साल 2 साल. And where is it given? So let me just reiterate. It is given in rule 17 ना. 2 साल जो है, cooling period of 2 years is given in rule 17. For your reference, you need not mention these in the exam. Next trick question. Candidature for directorship other than existing director, section 160 Companies Act. Ordinarily it is 1 lakh rupees का deposit, but for निधि we have an exception. है ना, निधि के लिए it is not 1 lakh, it is only 10,000. वो छोटा पर्पल कलर का गोला जो मॉड्यूल में दिया है ना, कभी देखा करो. Lot of exceptions are given over there. For Nidhi, it is not 1 lakh, it is 10,000 only. Last, ये वाला तो थोड़ा difficult है. I doubt
you would have cracked it on your own unless you are very good with the chapter. Rule 7 की ओर ये इशारा कर रहा है. Let's see what it is talking about. What will be the aggregate figure of minimum number of shares that would have been issued to the aforementioned 12 persons? 12 लोग को minimum कितना shares देना पड़ेगा? ऊपर जो लिखा है, ये जो 12 लोग हैं उनको कितना minimum shares आपको देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है. And the minimum number of shares that saving account holders and recurring account holders should at least hold if face value is rupees 10 each. Guys, for every deposit holder he has to hold minimum 10 shares of निधि. 10 से कम shares वो hold नहीं कर सकता. तो 12 लोग जो नए आए हैं ना, everybody has to hold 10 shares. It becomes 120. दूसरी बात, savings account and recurring account, we have 4 savings and 2 recurring, total 6. These have to hold at least 1 share, that is the rule. Savings and recurring 1 share hold करना पड़ेगा. तो ये 6 आ गया. एक बार निधि पढ़ लेना. This question is not one you can answer without thoroughly going through the nidhi. So that's from the MCQ end. कैसा लगा? MCQs which are integrated are more difficult. पहला अपना जो भी अपने को दिखा. Secondly, not all MCQs are difficult. Some of them are quite easy. But MCQ is a double-edged sword. अगर किया है शिद्दत से तो काफी अच्छा स्कोर लेके जाओगे आप. If you have not done it that शिद्दत से, then it might get you into trouble. Having said that, without any further ado, हम आगे बढ़ेंगे to the descriptive part. Let's start reading question number 1A. Decide with me, everybody. Decide in the light of Companies Act 2013 on the following proposals of loan for consideration before honesty. अच्छा, लोन का बात हो रहा है, मतलब either 185 या 186 ट्रिगर होने वाला है. लोन टू डायरेक्टर, अच्छा फिर 185, फिर संपला विषय है ना, 185 ही आएगा. लोन टू डायरेक्टर मिस्टर ए. अच्छा, कंपनी इज गिविंग लोन टू इट्स डायरेक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. अलाउड, नॉट अलाउड? पर्सनल लोन डायरेक्टर को दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. Can I say section 185(1) categorically denies, not allowed at all. Next, loan is given to Mr. B, which is a whole-time director. चलो इसका आंसर दे दो. Try to get me this answer. First question: is there a possibility that a loan might be given by the company to its whole-time director? Is there a possibility? If as per standard policy for all employees, दो चीजें. As per the employee service agreement, which is available to all the employees, and that agreement is passed using the special resolution. देखो किस चीजें कितना डीप जा सकती है. So categorically yes या no मत लिखना. Write these preconditions. There has to be a policy, there has to be a service agreement which has been passed by a special resolution, and it has to be made applicable to all the employees, then it is allowed. Section 185(3) में इसका ये exception है. So write this way: loan is given to Mr. X, who is a director, in the ordinary course of business of the company, and the rate is not less than bank rate. तो सब चंगा सी, all good.
Ordinary course of business है, rate is not less than bank rate and it is given to the director. It will work. This is perfectly allowed. Reference would be once again section 185 subsection 3. So very scoring question number 1A, 6 के 6 लेके जाना है घर पे. A very scoring part. Let's be honest. चलो B वाला part with me. First one. The board of director of ABC Limited declared interim dividend for the current financial year 2020-21. Hello. Hello. Yeah. I have a doubt, sir. Yeah. In question 1, second part relating to whole time director loan, you mentioned Yes. about special resolution. So Yeah. where is it given? इसमें नहीं है क्या सेक्शन जो अपना बताया था सेक्शन 185 डज नॉट मेंशन दैट द सेक्शन रिजल्ट. 185 ओनली सेज कि पॉलिसी होना चाहिए स्टैंडर्ड. अच्छा, इट इज नॉट गिवन इन द एक्ट क्या? मोस्टली नहीं दिया हुआ. आई विल चेक वंस. वेट. ऑलराइट, एक बार चेक करना. हैज टू बी इन द रूल्स, देन आई विल आल्सो चेक फ्रॉम माय एंड. ओके सर. ओके. या थैंक यू. या नेक्स्ट. The board of directors of ABC Limited declared interim dividend for the current financial year 2021. Okay. Proposal of dividend declared. अब dividend declare तो सीधा current liability अपना. It was accepted at the meeting and the dividend was declared. However, due to some reason, company has failed to pay the dividend to the shareholders within prescribed time. Mr. Futuristic, a director on the board of this company, had offered of appointment in other company PQR. किसी दूसरे कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर जाना चाहता है जिसका कंपनी has not paid dividend. Assuming that the failure to pay dividend is for a period greater than 1 year, can Mr. Futuristic be appointed as a director of PQR Limited? Assuming 1 साल से ज्यादा हो चुका है डिविडेंड का डिफॉल्ट के बाद. Absolutely नहीं कर सकता सर. Section 164 subsection 2 will get triggered. Where a company in which you are a director, you have to write the assumption, Ronak. You have to write the assumption. We assume, we presume that the default is persistent for 1 year from the date of declaration of dividend. And we also assume that 5 years have not elapsed from the date of default. मतलब वो देख, you can write it both ways, but still the way the question is structured, you can sense it. You get an intuition that institute wants you to write from point of view of 164.2, जहाँ पे clearly mentioned है failure to pay dividend might result in your disqualification as a director in some other company. But state the assumption. If I would be correcting the paper, मैं तेरे को wrong नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता. But try to get a idea about institute क्या मांग रहा है तुम लोग से. But state the assumptions. Take a stand, but state the assumption. That's fine. You are told to be subjective. I would still यहाँ पे इस question में specifically, because now we have to see it in case to case basis. But इस question में specifically, I can say institute wants us to ensure that the director is not appointed, is disqualified. Yes, you can write. मैं तो दे देता तेरे को पूरा marks, assuming that 1 year has not elapsed or assuming 5 years are already done. So check it out. Mr. Ronak किधर आ गया? Mr. Futuristic would be disqualified from appointment in PQR. Hey, what about his appointment in ABC Limited? ABC में क्या करे? He is already a director. Is he also removed from his position as director in ABC?
नहीं सर, आफ्टर द अमेंडमेंट नाउ ही हैज टू ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो गंदगी उसने फैलाया है साफ भी उसी को करना है, और इसीलिए नया कंपनी में डिस्क्वालिफाइड, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कंटिन्यूज टू बी द डायरेक्टर. Mr. Next question. So very easy. I think you can frame an answer. सारे निकल जाएंगे if that would be the case. बिल्कुल. We would have a situation where there are no directors at all and nobody can even get appointed. Are you getting the dilemma? Next question. Mr. Talented was a director in holding company and also in subsidiary company. ठीक है, हो सकता है. In fact, SEBI LODR would still be applicable. कैसा करेगा अपॉइंट रौनक? पुराना डायरेक्टर तू बोल रहा है रिमूव करेंगे, अगर ये प्रोवाइजो ना होता ऑफ फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूइंग इन एबीसी. बोल. हेलो, बोल भाई. अपॉइंटमेंट किया तो एनीवेज उसको ब्रीदर है ना, उसको फ्रॉम द पास्ट लाइक पास्ट नॉन कंप्लायंसेस ही हैज अ ब्रीदिंग 6 पीरियड, months राइट? वाला. हाँ, Those are applicable to the fresh appointment, so you have to assume that correct. the director was appointed within 6 months from the default. yes, right now also we like you said ना कि अपॉइंटमेंट नया भी नहीं कर सकते, ये भी निकल जाएगा, बट नया तो अपॉइंट कर सकता है. 6 months का वो ब्रीदर का बात कर रहा है, the proviso of section 164(2). अच्छा. हाँ, after all the see this section is not there, but even if all the directors were disqualified or vacated for the matter, Okay. they could have appointed like the promoters, like the section says when all the directors are vacated, yeah, so promoters or in their failure tribunal or central government They would can appoint. appoint बराबर, directors, बराबर. and Members then, cannot appoint and in for that those case. directors there would be 6 months Absolutely. का breather. बराबर. Yes. So yes, but anyways, this problem will not arise because after the recent amendment, now PQR में तो he cannot be appointed, but ABC में he will continue to be director. Mr. Talented was drawing managerial remuneration from both the companies. बिल्कुल चलेगा. In fact, SEBI LODR recommend करता है that one of the director of your holding should also be director in subsidiary. It was brought to the attention of the company that he cannot draw remuneration from both the companies. कोई सेंस है इस बात में कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी अगर दोनों का एक ही डायरेक्टर है, he cannot draw remuneration from both? कुछ भी, because of virtue of relationship. मतलब यार कॉर्पोरेट व्हील बचपन से पढ़े आए हैं. You cannot confuse us here. Discuss on the legality of the drawing managerial remuneration by Mr. Talented from both the companies. Guys, this is based on Schedule 5 and Section 197. हाँ, बिल्कुल. You total remuneration जो ना, yes, Mr. Talented can draw remuneration from both the companies, but Section 197 or Schedule 5 लगा के whatever is the upper ceiling limit, holding and subsidiary whichever is higher ceiling limit, that is his maximum managerial remuneration. उससे ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता. So Ronak has hit a bullseye. कि total remuneration should be higher available from any company, but उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. बिल्कुल रौनक. So Section 5, Schedule 5 Section 197 दोनों का रेफरेंस भर के दे देना, and you should be good to go here. Very logical question asked. ज़्यादा माथा पंची नहीं है. Next question. Ignored chapters but very simple calculations. आगे बढ़ते हैं. A group of total members holding 380 lakh issued share capital. 380 lakh issued share capital. Okay. In Zolo Limited, a listed public company, listed company, having total issued share capital of 15,000 lakhs as per the latest FS, alleged that company board of directors is conducting an act which is beyond the scope of articles or memorandum. Ultra wires का बात हो रहा है. Without altering either of them,
they want to make application to the NCLT, to the tribunal, to restrain the company. ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का बात हो रहा है, ऐसा तो हल्का सा समझ रहे हैं हमें. With reference to the provisions of Companies Act 2013, ascertain whether application will be admitted. कौन सा सेक्शन है ये? लग तो रहा है सेक्शन 245 है ना, लग तो रहा है. They are talking about application to the tribunal by the members in case of operation or mismanagement. So let's sort it out. 245 में what is given? कितना होना चाहिए मिनिमम मेंबर्स? What is given? एक तो एज में भी प्रिस्क्राइब करके लिखा है और दूसरा कितना लिखा है? 5% आफ्टर अमेंडमेंट. मेरे भाई रौनक, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, वापस सोच के आंसर दे. It's a listed company we are talking about. For non-listed, it was 5% after that amendment. Either 1,000 members or 5%, whichever is lower. But listed के लिए we have 2%. 2% है listed के लिए. So let's calculate 15,000 का 2% is 300 lakh. यहाँ पे है 380 lakh. So 380 divided by 15,000. Can I say greater than 2% members are applying? So the application will be accepted. Section 245 along with the rules clearly states this. Listed के लिए it is 2%. Just check it out, Ronak. So yes, the members can apply. 380 lakh issued share capital जिनके पास है, they can apply. Next question. Milap Limited, a company incorporated in India, has obtained consultancy services from an entity based in France. FEMA में आपका स्वागत है. Why consultancy services given? Is it infrastructure? नहीं sir. For setting up software program in their company. Okay. The consideration for such services is required to be paid in foreign currency. The consideration has to be paid in foreign currency. All right, we are heading towards current account transactions. The compliance officer of Milap Limited requires your advice regarding the threshold limit of remittance that can be made without prior approval of RBI. RBI मतलब Schedule 3, ये भी समझा. Schedule 3 में अगर याद करोगे आप, we divide the Schedule 3 into two parts. One is what is available for individuals, वो LRS वाला पूरा. Other is other than individuals के लिए क्या available है. In that, in Schedule 3, we specifically have consultancy services. Up to $1 million, it is allowed. But if you are into infrastructure consultancy, make it $10 million. So यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो 1 million तक अलाउड है. समझा ना, किधर देखना है? Where are the roads heading towards? Schedule 3 of FEMA Current Account Transaction Rules 2000. Current Account Transaction Rules 2000. Clearly दिया है. Consultancy services for other than individuals. Non-infrastructure $. 1 million. $1 million आएगा. इससे ज्यादा करना है तो आरबीआई अप्रूवल. देखो इतना सिंपल है फेमा. जिसने वो 3 शेड्यूल पढ़ा है उसको तो बिना सोचे समझे ये आंसर जम रहा है. Simple 6 marks you are getting out of FEMA. That's how it is. Next. आ गए वाइंडिंग अप में. XYZ Limited is being wound up by the tribunal. वाइंडिंग अप चल रहा है. All the assets of the company have been charged to the company's bankers. अच्छा, there is a charge. There are secured creditors here.
We have secured creditors. कितना 5 करोड़ का secured creditors है. Company owes following amounts to others. Workers pari passu. याद आया कुछ? All roads are showing us the direction of overriding preferential payments, which is a very important area from winding up. तो ये 5 करोड़ और ये 1.25 करोड़ विल बी पारी पासू. पारी पासू समझते हो? इक्वल इक्वल प्रोपोर्शनेट. फिर गवर्नमेंट और अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स. फाइन. You are required to compute with reference to the provisions of Companies Act the amount each kind of creditor will get. If the amount released is 4 करोड़, 4 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करके देना है. ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल में आएगा दो चीज. पारी पासू आएगा, सेक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड ड्यूज टू द वर्कर्स. सो इनको प्रोपोर्शनेटली ले लो. 5 + 1.25 जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में चल पहला अपन वर्कर को कैलकुलेट करते हैं. कितना मिलेगा? 1.25 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना अवेलेबल है? 4 करोड़. It's roughly coming to, and I say 80 lakh. Yep, it's 80 lakh for workers. वर्कर्स को 80 लाख मिलेगा. पारी पासू है, सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर को मत देना. एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर को बचा हुआ मिलेगा. 4 करोड़ में से 80 लाख गया. 3.2 CR are available to secured creditors. और अपने सरकार को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. So that's how we distribute overriding preferential payments. A simple question from winding up. 8 marks. 8 marks. सोचो. And you can score पूरा 8 का 8 marks. Give reference of the section, do the calculation, and state that government and unsecured creditors are not getting anything. Next, PMLA. Mr. B purchased a flat out of proceeds earned by drug trafficking. आ गया PMLA. ड्रग्स दिखता है तो PMLA आता है. रिया चक्रवर्ती मत लिख के आना एग्जाम में. The flat was attached by the director. ED ने attach किया flat. Very good. After complying with the procedures of section 5, Mr. B got a stay from High Court. अच्छा. For any proceedings under the said act, but the stay was subsequently vacated. मतलब अभी enforcement directorate ने attach करके रखा है flat out of drug proceeds. State the relevant provisions of PMLA for computing the period of provisional attachment including extension. Can I say section 5 automatically trigger हो रहा है? लिखा भी है question में. Director or deputy director with the permission of director, if they have reasons to believe, and reasons should be in writing, they can attach any property, but that attachment cannot be for a period exceeding 180 days. But also they can get an one-time extension of 180 days. And also, my dear friends, अगर हाई कोर्ट ने स्टे किया रहेगा तो वेकेशन ऑफ स्टे से 30 दिन तक प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है. 30 days फ्रॉम वेकेशन प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड. ये सब लिख के आना एग्जाम में. सेक्शन 5 कट कॉपी पेस्ट. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट दे आर आस्किंग whether Mr. C, son of Mr. B, can occupy the flat. There is no restriction on occupation. Attachment का मतलब है you cannot sell or dispose of the property. You cannot make any material changes in the property. You are free to continue staying in the property. That is allowed. बिल्कुल चलेगा. Assuming that C has interest in the property,
he can continue to stay in that property under provisional attachment. कंटिन्यू कर सकता है स्टे करना. अच्छा, स्कैम 92 देखा तुम लोग ने? अच्छी बात है, काफी क्लियर है अटैचमेंट होता क्या है. यू, अरे हाँ बिल्कुल, हर्षद मेहता का घर, ही स्टिल कंटिन्यूड टू स्टे इन इट. एब्सोल्युटली नाइस ऑब्जर्वेशन रौनक भाई. क्वेश्चन 4A, लो आ गई मुसीबत से भी. Nobody is very happy solving SEBI. I don't know why. SEBI has undertaken inspection of books of accounts, okay, and records of LR Limited, a listed public company. Specify the measures which may be taken by SEBI under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 to protect the interests of investors. Some sections of SEBI we do it very nicely, and I think this is one such section जिसका अभी जिक्र किया जा रहा है. Yes, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 पूरा चिपका के आना है. क्या क्या किया जा सकता है, चलो एक बार तुम्हें भी मैं दिखा देता हूँ. व्हाट इज देयर ओवर देयर, लेट्स जस्ट सी व्हाट इज देयर. सॉल्यूशन टू एमटीपी में एक बार चेक करते हैं. ये लो, वी हैव क्लियर आंसर. सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 ऑफ सेबी एक्ट. Suspend the trading of any security, restrain any person from accessing stock market. Harshad Mehta, Ronak. Suspend any office bearer of stock exchange. Impound or retain the proceeds of securities जो भी मिला है, and attach for a period not exceeding 90 days along with proviso, special court order and वो सब लिख के आना एग्जाम में. And इंटरमीडियरी जिसके पास शेयर्स का कस्टडी है उसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, not to alienate, not to dispose of that particular security which is under investigation. Apart from that, section 11 में जो भी लिखा है you can write it down. वो 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो लिखना है लिख सकते हो. पेनल्टी प्रोविजंस का भी जिक्र करना would make more sense here. So that's how we are supposed to answer a very direct question which has been asked. Let's proceed. सारफेजी में आपका स्वागत है. AWP Limited defaulted in payment of term loan taken from a nationalized bank after security created as first charge on land and building. So nationalized bank is the secured creditor, land and building is the secured asset. The bank classified the debt as a non-performing asset. होना ही था as per the Banking Regulation Act. Debt को जो non-performing classify करना है वो कर दिया. The bank issued notice pursuant to section 13 of SARFAESI. Enforcement of security interest होने वाला है दोस्तों. To discharge its liabilities in full within 60 days. नोटिस में लिखा है 60 दिन के अंदर liability discharge करो, नहीं तो security interest हम enforce करेंगे without going to the tribunal. ऐसा लिखा है. Company objected for full settlement. कंपनी बोलता है हम partially करेंगे. यार the time limit is less, ऐसा कंपनी बोलता है. Bank did not respond to the objection. Objection को तो यार respond करना चाहिए था. In light of these provisions, section 13 पूरा का पूरा of SARFAESI section 13 देखो एक बार. First things first, was the objection of company valid? बैंक NPA क्लासिफिकेशन के 60 दिन के अंदर कंपनी को बोलता है कि जस्ट रीपे ऑल योर डेट्स, रीपे ऑल योर ड्यूज. एब्सोल्युटली करेक्ट. 60 दिन का ही टाइम देना है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस.
whether bank has to respond. सेक्शन 13 अगर आप ज्यादा गौर से देखोगे, if you extremely carefully see, there is a time limit for bank to respond after the objection has been raised. Company has every right to raise objection and bank has to respond it within 15 days of receipt. 15 दिन के अंदर from the receipt bank has to respond. And lastly, whether the bank can enforce the security interest without intervention of the court. The whole premise of SARFAESI is on this very logic कि आपको कोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं है. Absolutely, the intervention of court is not required. Absolutely correct. So that's how you will answer these three questions. Whether the objection is right, objection is incorrect, it is invalid. Should the bank respond? Answer is yes, within 15 days from the receipt of objection. Can the bank enforce security interest without approaching the court? 100% yes. That is the whole logic of SARFAESI, why this act even exists. Next, बहुत बार देखा हुआ क्वेश्चन है, Radix Limited, foreign company, Thailand registered company. Although it has no place of business established in India, it is engaged in online business through remote delivery of healthcare service. State the legal position. Is Mr. Radix a foreign company? Section 2, clause 42, read with rules. Foreign company के तीन पहलू, the three things which are at most essential. 1, foreign company has to be incorporated outside India. 2, it needs to have a place of business in India, but the place of business can be physical or through electronic mode, or it could be through an agent. And 3, there should be some business activity in India. Electronic mode inter alia. Electronic mode inter alia will include the online business through remote delivery. And hence, Radix Limited would be a company incorporated outside India. It would be a foreign company as per section 2 clause 42. But there is one issue, 8 mark. ये 8 mark के लिए तो justified नहीं है. So how can we increase the length of this answer? Answer तो सबको आ रहा है, but हमें length भी बढ़ानी पड़ेगी. 8 mark के लिए बहुत छोटा आंसर लगेगा. पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड elaborate करो. There are 5 points in electronic mode. Telemarketing, telecommunication, cloud, बहुत 5 points है अलग अलग. Whether or not the server is in India, वो पूरा लिख के आना. देखो इजी 8 मार्क दे दिया तुम लोग को फॉरेन कंपनी में, और तुम लोग इसको सब इग्नोर करते हो. कैलकुलेटर हाथ में, CIRP में आपका स्वागत है. Following particulars relate to Star House Private Limited, which has gone into corporate insolvency resolution process. On the basis of information, lay down the priority. IBC का priority, IBC का waterfall. Let's just sort it out. What are the items given? Amount realized from sale of liquid assets. This is your amount available. This is your corpus available. Secured creditor who have relinquished security. Can I say they are the first priority, second priority? Insolvency, professional and cost of insolvency के बाद creditors which have relinquished are the second priority along with workmen. Unsecured financial creditors बाद में आएगा. Income tax payable भी बाद में ही आएगा. Cess payable to central state government. These two are government. 2 years, 1 year allowed. It has got a better priority than unsecured. Fees payable to RP. RP का fees सबसे पहला. Expenses incurred for resolution professional सबसे पहला, first priority. Workman salary for 30 months
इसको 24 मंथ्स में कन्वर्ट करो एंड दैट विल बी योर प्रायोरिटी नंबर 2। ये प्रायोरिटी नंबर 2 बनेगा, बचा हुआ बाद में अदर ड्यूज में जाएगा। एंड लास्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स, लास्ट, इनके बाद तो कोई नहीं है। चलो कैलकुलेटर हाथ में। सबसे पहले 7 लाख आर द टोटल असेट्स अवेलेबल। व्हाट विल आई रिड्यूस फर्स्ट? इंसॉल्वेंसी का फीस पहले रिड्यूस करते हैं। आरपी का फीस है 37,500, expenses of resolution is 17,500. So after the first reduction, the value which is remaining is 6,45,000. फिर second क्या था? Secured creditors who have relinquished their claims 2,50,000 and अपना वर्कमैन जो था उनका 24 months का सैलरी 1,50,000 is for 30 months. I require for 24 months. Can I say 1,20,000 is the answer? वो भी एक साथ रिड्यूस होगा, वर्कमैन एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन वर्कमैन सिर्फ 1,20,000 24 मंथ्स का। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय का 12 महीने का। कोई एम्प्लॉय का दिया है क्या कुछ? एनीथिंग फॉर एम्प्लॉय इज गिवन? दिख तो नहीं रहा है। एम्प्लॉय का नहीं दिया है, इसका मतलब कैन आई अज्यूम? नहीं दिया है जी। अच्छा, फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएगा। काइंड अटेंशन फॉर यू ऑल, वी आर इन आईबीसी, गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रायोरिटी हियर, द क्रेडिटर्स आर प्रायोरिटी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वुड बी नेक्स्ट। तो 2 लाख इधर गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज 75,000। नाउ गवर्नमेंट का ड्यूज आ जाएगा। गवर्नमेंट का 25 एंड 10,000 तो 35,000। और उसके बाद 40,000 जो पेंडिंग है। फिर क्या रिड्यूस होगा? इक्विटी रिड्यूस कर दूं ना, हो गया? नहीं सर, वो वर्कमैन का 30,000 पेंडिंग है। वर्कमैन का 1,20,000 खाली पे हुआ है, 30,000 और अदर ड्यूज। तो अदर ड्यूज नीचे आता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स बट आफ्टर गवर्नमेंट ड्यूज, तो अदर ड्यूज में जाएगा which would be 30,000. So amount left with equity shareholders is 10,000. 10,000 अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ पेंडिंग है। लेट्स कंफर्म आवर आंसर विद द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड। देखो वी हैव फॉलोड द सेम। कोई डाउट है तो पूछ लेना। 6 मार्क्स दे के गया तुमको, वो भी वाइंडिंग अप जैसा चैप्टर एंड आईबीसी जैसा चैप्टर भी, एंड दोनों में प्रायोरिटी पूछा था क्लेम्स का। है ना? स्टार्टिंग में जो अपना फियर था, आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट 2 एमसीक्यू बेस्ड, उसके बाद वी हैव फाइनली सैल्वेज्ड लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर ऑन द कोर्स ऑफ एग्जाम्पशन ओवर हियर। So don't panic, keep a very calm state of mind. Question number 1 might be difficult, MCQ might be difficult, but on an average paper would be pretty solvable, I would say. Last few questions which are pending. Next देखते हैं क्या लिखा है। In the AGM of XYZ Limited, while discussing on the matter of retirement and reappointment of director Mr. X, allegations of fraud and financial irregularities were leveled against him by some members. Okay. This resulted in chaos in the meeting. The situation was normal only when chairman declared about initiating an inquiry against the director of Mr. X. However, could not be reappointed in the meeting. ठीक है. Matter was published in the newspaper. एक second.
जिसका इंक्वायरी चेयरमैन बोला वो अपॉइंट ही नहीं हुआ एज अ डायरेक्टर, and hence nobody filed an initiated an inquiry. Nobody asked the tribunal, nobody asked the special court to take up the inquiry. The matter was published in the next day's newspaper. next दिन अखबार में आ जाता है, पेज नंबर 1, मिस्टर एक्स बड़ा फ्रॉड, मिस्टर एक्स बिग बुल हैज फॉलन, जो भी है आ जाता है. On the basis of such news सुन के court takes cognizance, special court takes cognizance of the matter and takes action against the director. State सही किया कि नहीं? Special court ने suo motu cognizance लिया. We are dealing with adjudication and special court chapter. कर सकता है special court, न्यूज़पेपर में आया है, बॉम्बे टाइम्स में आता है, ये आदमी मिस्टर एक्स इज अ लायर, कर सकता है फिर स्पेशल कोर्ट सीधा suo motu इंक्वायरी इनिशिएट. रीजंस टू बिलीव नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है. वी हैव स्पेसिफिक सेक्शन फॉर दिस स्पेशल कोर्ट चैप्टर में, चेक इट आउट. सेक्शन 439 देखो, सेक्शन 439 में इट इज क्लियरली गिवन आइदर द मेंबर्स और द प्रमोटर्स or the central government has to apply or the registrar has to apply, and only then the special court can take cognizance. But there is only one exception. Let's see कितने लोग को जम रहा है. एक केस में suo motu cognizance स्पेशल कोर्ट ले सकता है, बहुत बड़ा फ्रॉड. कौन सा केस है वो? 2126. शाबाश SFIO. जब SFIO आपकी चोरी पकड़ता है 447 वाले फ्रॉड की, in that case my dear friends the special court can take suo motu cognizance, but in every other case an application for inquiry has to be filed by the members, promoter, registrar or any person authorized by the central government. So take care about this. Section 439 याद से एक बार देख लेना after the lecture. Court cannot take suo motu cognizance except section 212 subsection 6 SFIO का इंक्वायरी के तहत फ्रॉड पकड़ा जाना. Next question on hand is, the meeting of EBX Limited decided to pass a resolution for appointment of Mr. S as an independent director. कर लेगा. Draft a specimen resolution. Very easy. How are we supposed to draft a resolution? It is from that chapter number 13 जो आपने कभी देखा भी नहीं रहेगा. 4 मार्क के लिए पूछा है. Talk about appointment of independent director. Start the resolution with resolved that से शुरुआत करना. Give reference to sections which are for independent director and appointment of it. Section 149, 150, 150 for DIN and 152 इसका reference देके आना. And then say that he has been appointed by the special ordinary resolution. Reappointment है तो special resolution. So that you can definitely write. Independent auditor है. So I trust you with this. 2 मार्क तो salvage करके आ जाओगे यहाँ से. DIN नंबर मेंशन करना मत भूलना, मैंडेटरी 150 सेक्शन. IBC का फेवरेट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ CIRP. सेक्शन 12. CIRP has to be completed within 180 days. But अगर 180 दिन में नहीं है possible, you can apply for one time extension, and that extension would be maximum of 90 days. But that is only one time extension, and that one time has lot of relevance. You will realize after solving the questions. फिर बाद में total 330 days is the maximum overall ceiling limit available. So if the stay of High Court is there, any court has stayed, so you add that as well. But सब मिला के it has to be 330 days, not more than that.
So I trust you in writing this answer very easy. You are very comfortable with the section as well. And talk about 66% of votes. CIRP के लिए 66% voting share from COC, Committee of Creditors, has to be there. So insolvency commencement date के 330 दिन के अंदर you will have to get the CIRP done in any case. Last question, and probably the easiest of all, the perfect way for the send off of you guys. Adjudicating authority appointed under PMLA issued an order attaching certain properties of XYZ Limited, ठीक है, alleged to be involved in money laundering for a specified period. Property का attachment किया adjudicating authority में. Company is aggrieved by the order of adjudicating authority and it seeks your advice about the remedy. बहुत बार देखा है ये क्वेश्चन, nothing new for us, for those who are having November attempt. रेफरेंस तो आपको पता है किसका देना है. फर्स्ट टॉक अबाउट द एपेलेट ट्राइब्यूनल, टॉक अबाउट 45 डेज के अंदर एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हो. टॉक अबाउट कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ एडिशनल 45 डेज. टॉक अबाउट एपेलेट ट्राइब्यूनल इज सेम एज स्मगलर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट. वो एक्ट जो था उसके तहत जो एपेलेट ट्राइब्यूनल आपने बनाई है, इट इज सेम फॉर PMLA, स्मगलर एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स. Also give reference to section 42 हाई कोर्ट. 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, इसके बारे में भी देना रेफरेंस. एंड गाइज एक बात याद रखना, PMLA में फॉर गोइंग टू द हाई कोर्ट यू नीड नॉट ओनली प्रूव इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हाई कोर्ट तक लेके जा सकते हो आप PMLA में. सो टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स. रेफरेंस आएगा सेक्शन 26 और 42 of PMLA Act, and additionally you can give reference of section 25 कि smugglers and foreign exchange manipulators forfeiture of property act के तहत who is the appellate authority. The same appellate authority is there for PMLA as well, so give that reference as well, and you are I think good to get this 3 marks. पूरा लेके आना. That leaves us, that completes our paper and leaves us with only one agenda. सर वो एक क्वेश्चन जो कुछ बात कर रहा था हमने आधा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ MCQ. Maximum amount that can be paid to Mr. Tushar as per the provisions of Companies Act 2013. यार सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने पूरा MCQ पढ़ा था, पूरा केस पढ़ा था, कहीं पे भी नहीं लिखा है लॉस है. इट इज नोवेयर रिटन दैट द कंपनी हैज सफर्ड अ लॉस. हाउ कैन यू इवन आस्क फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन. चल ठीक है, पूछ लिया, अज्यूम दैट इट इज अ प्रॉफिट. तो यार तुमने हम लोग को प्रॉफिट का भी फिगर नहीं दिया कि उसका 5% में MD को अलॉट करता, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, उसका भी फिगर नहीं दिया. थर्ड थिंग, चल मैं मान लू देयर इज अ लॉस, मैं मान लेता हूँ. अवर इफेक्टिव कैपिटल वाज 19 करोड़. सो चेक शेड्यूल 5 चेक करो. assumption of loss, effective capital is 19 करोड़. 5 and 100 के बीच में, can I say 84 lakh is the maximum annual remuneration per director, 84 lakh. But Tushar was appointed for only 8 months. तुषार खाली 8 महीने के लिए अपॉइंट हुआ. प्रोराटा मार दो, 84 लाख एनुअल, तो प्रोराटा 8 महीना कितना आ रहा है? 84 लाख 8 by 12, it's 56 lakh. शेड्यूल 5 एकदम बराबर करके जाना. KMP चैप्टर में शेड्यूल 5 में बहुत ज्यादा कंटेंट है पूछने के लिए. एंड इवन इन शेड्यूल 5 अगर आप देखोगे, इट इज क्लियरली गिवन दैट contribution to annuity fund
शेड्यूल 5 में क्लियरली दिया है कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी फंड इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सीलिंग लिमिट, दैट इज पेड इन एडिशन। तो ये 6 लाख भी आप जोड़ दो। एग्जैक्ट आपको चाहिए शेड्यूल 5 में किधर है, जस्ट चेक शेड्यूल 5 एक बार, आपको दिख जाएगा ये एन्युटी फंड का कंट्रीब्यूशन इज perquisite not part of maximum remuneration, that is add on plus additionally we have additional remuneration as a professional which has been approved by NRC. so professional fees are not part of the managerial remuneration, इसको भी अलग से ऐड करो। 2 लाख रुपया 8 महीने के लिए, it's 16 lakh। and sitting fees as per section 197 if you see that is in addition to the managerial remuneration, sitting fees भी in addition रहता है। 4 मीटिंग अटेंड किया तुषार ने +4, this will also get added। भाई साहब मेरा तो आंसर 82 आ रहा है, इंस्टीट्यूट ने 86 कहाँ से लाया? Sir, they have released a video, and in that video, while discussing MTP, they have said that the correct answer is 82 lakhs. 82 correct है ना मैडम? Yes, 100% correct. So we stick with this because institute का logic I tried to find out. No, they have recorded the video and they have said in the video that the correct answer is 82 and 86 is the error. They expect to change the answer, but yet it is not amended. But they have said that it is 82. All right, thank you very much निधि। Yes. बताने के लिए शुक्रिया, नहीं तो वो 86 भी आपको बताना पड़ता है इंस्टीट्यूट ने क्या लॉजिक यूज किया है, which absolutely made no sense. Guys, 82 would be the right answer here. कैलकुलेशन एक बार मैं दोहराता हूँ, लेट मी रिपीट द कैलकुलेशन। अपने पास इफेक्टिव कैपिटल ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो इफेक्टिव कैपिटल इज एप्लीकेबल, दैट लॉजिक इज एप्लीकेबल व्हेन आइदर द कंपनी हैज सफर्ड लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर or there is inadequacy of profits. We assume that there is inadequacy of profits or losses. So for 5 lakh 5 crore 100 crore के बीच वाला we have 19 crore. So if you see that table, it is clearly given 84 lakh. 84 lakh is for पूरा साल throughout the year. 84 is for year, but अपने को तो सिर्फ 8 महीने को तुषार को अपॉइंट किया था। He was appointed in August, so it's only 8 months. 84 multiplied by 8 divided by 12 amounts to 56. Now we go to the schedule 5, where it's clearly given that annuity fund ka contribution is over and above that limit. So add 6 lakh. ये सब इग्नोर मार दो, dearness allowance, HRA, everything is covered in maximum limit. Reimbursement of direct tax भी covered है। Then this is professional charges which are not part of managerial remuneration approved by NRC. So ये 16 लाख हमने यहाँ पे लिया, and we have 4 lakh as the director sitting fees which is not part of the remuneration ceiling limit. ऐसा करके we got 82 lakh as the correct answer. Guys, is it clear? ये थोड़ा trick question था, and I'm very happy institute has ask this question because it challenges our preconceived notions कि directors तो यार मेरे हाथ की मैल है। I am very good at these section 149 to 205. Institute ने पूरा challenge किया that सामने वाला opponent भी उतना ही खतरनाक है, और निधि कंपनी का पूछ के तो इंस्टीट्यूट ने हमें उधर मतलब दिखा दिया कि हमने कितना % कवर किया है। After that paper was pretty smooth. Occasional hiccups, but that happens in every paper. मेरे साथ भी हुआ था। I still ended up scoring 74 in the paper 4. Paper 6 में I ended up scoring 73. So that's not an issue. थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। All you need to do is paper देखने के बाद you need not panic. होता है वो हाथ हिलता है, honestly बोल रहा हूँ। Your hand starts shivering. You start reading ना। Paper 100 marks, section A, section B, question number 1 is compulsory, working note should form part है, तुम लिखते इंस्ट्रक्शन पढ़ता है ना, हाथ शिवर होना स्टार्ट करता है। That is when अपना confidence we have to bring it to play.
पूरा स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है। स्टेप नंबर 1, अपने हाथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करनी है, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है डिसाइड करना है। स्टेप नंबर 2, व्हेन द बेल रिंग्स, अपने हाथ में पेपर आ जाता है, यू कैन बाय द वे हाईलाइट, इतना कुछ इशू नहीं आता, पेन से वगैरह हाईलाइट कर दो, सेक्शन नंबर वगैरह बाजू में लिख देना, मार्किंग जो करना है कर लेना बिंदास। आई वुड रेकमेंड सेक्शन या चैप्टर एटलीस्ट लिख देना हर क्वेश्चन के बाजू में, इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया, एटलीस्ट कौन से एरिया से पूछा है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर एमसीक्यू का पेपर हाथ में आता है, वंस दैट हैपेंस एमसीक्यू का सॉल्विंग स्टार्ट कर दो, स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, देन गो टू द केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एंड गेट इट डन। कोई डाउट है मूव फॉरवर्ड, बाद में देख लेंगे, जितना 2-3 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है या तो यू थिंक आफ्टरवर्ड्स या यू लाइक मार्किंग कर देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो मार्क एवरीथिंग। आफ्टर दैट, आफ्टर एमसीक्यू इज डन, डिस्क्रिप्टिव एक एक करके करते जाना, एज लॉन्ग एज हैंड राइटिंग इज लेजिबल। प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस मत करना, whatever you want to bring to the attention of paper corrector, उसको जिस पेन से लिख रहे हो जल्दी से हाईलाइट कर देना, don't waste any further time highlighting afterwards, उधर ही कर देना जल्दी से। and whatever questions you are more comfortable have to be at the start, because that will create an impression and that might help you as you progress throughout the paper. That is all about paper 4 I have to offer. I hope the session was useful for you all, and I'm opening the session for question answers. वैसे तो अपना open ही था, but I'm opening the session for Q&A as well. You can ask whatever you wish. कुछ पूछना है पूछ लेना, or else taking the permission. वैसे भी काफी अपना टाइम गया है, my objective was घाई नहीं करना था. So I think I can request Sanika. Sanika? Yeah. If they want to ask any questions, they surely can. Otherwise, we can close the meeting. I'm done with the discussion and हो गया हम लोग का. Okay. So I am Sanika Naik, and I, on behalf of the entire Thane Vikasa team, would like to offer a vote of thanks. Firstly, thank you C. Ashaya Patankar sir for taking out time and holding this session. It was a wonderful and detailed session. You started with the marks and syllabus coverage, then you moved on with memes, which told us what is important for the subject. Then, of course, the MTP discussion, which was so detailed. You told us the important sections, the confusing areas, the important rules, and ended up with the superb exam tips. I think this would really help the students. We really appreciate your efforts taken for this subject and your love for the subject. I would also like to thank all the participants for being so kind enough and interactive for helping us run this session smoothly. I hope everybody's doubt is solved, and if you would like to connect with Ashay sir, do let us know. We'll connect you all. Yeah, that's all for the day. Thank you, everyone. Yeah, thank you very much. It was my pleasure as well to be taking this session on behalf of Thane Vikasa, and I hope the session was fruitful. बस इतना ही लास्ट में कहना चाहूँगा, approach the exam with confidence. Last 20 days है, and you guys I know can revise thoroughly during that time. So we have today identified what can be asked. हमें एक fair idea आ गया एक paper देख के. So just go accordingly. Try to leave as few things in the option as possible. Preferably nothing, but फिर भी. अच्छा 1.5 days का flow. You are sure 1.5 days ही है ना बीच में? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं आ रहा है. Start with economic laws, PMLA. चल बना देता हूँ मैं flow. No holiday in between. So let's sort. Day 0 जो रहेगा, Day 0 समझते हो जिस दिन तुम ऑडिट का पेपर लिख के आओगे. भाई इस पे बात नहीं करेंगे. Anyways, on Day 0 when after you come back from audit paper, start with economic laws. Try to finish all 6, if not at least 5. Arbitration conciliation छोटा सा है. FCRA is very small. PMLA is very easy. IBC, I think most of the students like that chapter. So we are very good with that chapter. We can do it. Surface is also manageable. FEMA चाहिए तो कल के लिए रख देना. So Day 0 economic laws at least 5.
you have to do. Then we approach day 1 morning एकदम fresh. सुबह उठ के क्या करना है सबको पता है, अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है. डायरेक्टर्स का 3 चैप्टर पहले कर लेना. Day 1 morning do directors पहला. Try to do it as detailed as possible and invest as much time as you can. Then you approach certain small chapters. Afternoon session भी इसी में जाएगा. चल लेट्स अज्यूम आफ्टरनून का थोड़ा टाइम भी आपको मिल जाता है. छोटा छोटा चैप्टर्स NCLT करो, अपना स्पेशल कोर्स करके आना. छोटा छोटा चैप्टर मार्क्स देगा. फॉरेन कंपनी, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, एंड कोई मिस आउट कर दिया वाइंडिंग अप भी कर दो. जितना तुमने किया है वो वाइंडिंग अप भी उसी दिन कर देना. NCLT, स्पेशल कोड, फॉरेन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन आणि मिसलेनियस. ऑब्वियसली मिसलेनियस तो आएगा. ये पूरा आई थिंक दिन तुम्हारा ले लेगा. थोड़ा बहुत रात का टाइम बचेगा. स्पेयर इट फॉर चैप्टर 4 and 5. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट day 2 एग्जाम डे. 2 बजे वैसे तो निकलना है. थोड़ा मॉर्निंग जल्दी उठ जाना, एक दिन एडजस्ट कर लेना बिकॉज थोड़ा वास्ट है सिलेबस. सिक्योरिटीज लॉ कर लेना टू द एक्सटेंट यू कैन. आई वुड स्टिल से सिक्योरिटीज लॉ में पेनल्टी इज प्रिटी इंपॉर्टेंट. सेबी एक्ट का पेनल्टीज एक बार देख लेना, वो पूरा सेक्शन 15 का सीरीज. LODR ऑल्सो काफी कुछ एरिया है जो पूछा जा सकता है. सीकरा तो हमें पता है, बहुत बार पूछा है. एंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन एंड वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन वाला, ये लास्ट में रखना. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. डायरेक्टर्स के लिए वी आर फ्रेश, सिक्योरिटीज लॉ के लिए वी आर फ्रेश. फेमा कभी बीच में टाइम मिले फिर कर देना. And economic laws we are taking one law at a time on day 0 itself. Fair enough, Ronak. Hard and fast nahi hai, but I think this would be very much effective. I had followed this, तो देख लेना वैसा. यप्स. और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चल मैं ही बता देता हूँ. सर जी पेनल्टीज का क्या करें? होता है ये प्रॉब्लम सबको. What to do with the penalties? That's a very big issue. पूछा तो जाता है एग्जाम में, याद तो सब रख नहीं सकते. अब कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करने जाना. फॉर November 20 कोई नया एक्सपेरिमेंट करने मत जाना. जो तुमने ऑलरेडी किया है पेनल्टीज वो एक बार देख लेना. फिर भी आई वुड से रिस्क है तो इसके भाई तू स्कैम 92 की जगह पेनल्टीज कर लेता ये टाइम में. एनीवेज what penalties could be expected. फिर भी सबसे पहला सिक्योरिटी लॉ में देयर इज अ वेरी लिमिटेड कंटेंट, तो पेनल्टी आने की गुंजाइश रहती है. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी का वो पेनल्टी जो है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. आफ्टर दैट PMLA सेक्शन 4, ये तो कोई मिस आउट नहीं करता, सो टेक केयर अबाउट दैट. अदर देन दैट focus on more on compoundable. हाँ वो सब कर लेना. फोकस मोर ऑन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल पेनल्टी. सॉरी, नॉन कंपाउंडेबल मतलब जो बीच में एंड आता है. देयर इज नो पेनल्टी इन लीव ऑफ प्रोसिक्यूशन. बोथ विल हैपन, पेनल्टी एज वेल एज प्रोसिक्यूशन. सो टेक केयर अबाउट दिस नॉन कंपाउंडेबल पेनल्टीज. एंड अदर देन दैट फिर जय माता दी, जितना याद रहे. डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ टू मच, बट ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन. और जो लोग मई से रुके हैं, तुम लोग को तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. सब पेनल्टी वगैरह भी करके पूरा सफा चैट कर दो लॉ का पेपर. बस इतना ही मेरे एंड से. और कुछ पूछना रहेगा यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी. वी टुडे कुड नॉट डिस्कस टेक्निकल डाउट्स अदर देन MTP. इफ यू हैव एनीथिंग वाया विकासा पहुंच जाना मेरे तक. एंड आई होप द सेशन वाज यूजफुल एंड यू आर अप्रोचिंग योर रिविजन full of confidence and doing sincere efforts. Guys, thank you very much for the cooperation and I hope to see you sometime later. कभी पेड़े लेके वगैरह मिलेंगे. चलो सानिका, thank you very much for Vikasa as well. Thank you so much. New room करना है ना मैडम? Yeah. Okay, चलो, thank you. Thank you everyone.